मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 76 अफराद इंतकाल कर गए। Taking the total death toll to over 18,600 as the country is facing a third wave of the COVID-19. मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ रही है, ताहम इसके बावजूद शहरी कोरोना से बचाव की तदाबीर पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। February 26, 2020, the day Pakistan confirmed its first case of coronavirus. We have been recognizing and appreciating our doctors and health workers as frontline warriors, but at the same time, those who provide information have been seriously neglected and even taken for granted. In conversations with Bureau Chief Naseem Siddiqui, we got to know about how major schedule changes for Ab Tak News occurred and how COVID has affected the work efficiency. It was really difficult when COVID-19 erupted, especially in 2020. We have to do many things from at home because we are a professional organization and we have to do day-to-day things in the field. Like reporters, they used to go in the field, I have to go in the field as well, but it was restricted. So we have to send our staff to home to stay at home and report from there. And it was really very difficult to report from home because this is not a thing like that you just sit on the computer and keep doing your work. We have to be in the field. We usually attend press conferences, we go on different events, and it was really become very difficult to cope with that, but with the help of God, at least we have done something good in COVID-19. Upon asking whether Naseem Siddiqui would consider his staff as frontline workers, we received a very encouraging response. I appreciate my reporters and cameramen, and they were frontline workers because they were going to the hospitals, they were going to the COVID wards, and they were exposed to everything, and they were working day and night hard. So it's not the doctors. I appreciate the doctors, but the staff with the doctors, the people who are working in the hospitals, like security guards and other people as well, and my staff, like my reporters, my cameramen, they were the frontline workers as well. With multiple reporters losing their lives due to COVID, the government unfortunately did not provide any precautionary equipment to the media teams. I'm afraid it is not the case. We relied we did our own precautionary measures while not only covering the news but presenting it throughout. I think nothing extraordinary in terms of equipment or gadgets were provided to us or given to us in any way. A journalist from Islamabad, Tanzila Mazhar, stated the pandemic brought the journalist in a tight spot. On one hand, they had the professional responsibility to inform the public, and on the other hand, it was not safe to report from the field. After the loss of multiple journalists, Nadeem Chaudhry, who is a health reporter and joint secretary of National Press Club, shared his insight on how the loss of fellow journalists affected the media. हमारे कुलीग सीनियर सहाफ़ी और जियो पार्लियामेंट के मेज़बान अरशद वहीद चौधरी का अब से कुछ देर पहले इंतकाल हो गया है। अब से तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले उनको कोरोना वायरस हुआ था और जब उनकी हालत बिगड़ी थी तो उनकी फैमिली ने बड़ी कोशिश की कि इस्लामाबाद में कहीं पे वेंटिलेटर मिल जाए। वेंटिलेटर किसी हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से रावलपिंडी के अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया था और कुछ अर्सा वो वेंटिलेटर पर रहे और आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि वो कोरोना वायरस से उनका इंतकाल हो गया है। सबसे पहले हमारे जो नेशनल प्रेस क्लब के नायब सदर थे अरशद वहीद चौधरी, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उससे उनकी मौत वाक़या हुई थी। दूसरे हमारे रावलपिंडी से हेल्थ रिपोर्टर थे जौहर मजीद, उनकी भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डेथ हुई थी। तो ये इस तरह के हमारे तकरीबन 7 साथी हैं पूरे पाकिस्तान से जिनकी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डेथ हुई थी। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की उनको इमदाद नहीं दी गई और अभी तक उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी फ़ीसों के मसाइल नेशनल प्रेस क्लब जो अपने तौर पर देख रहा है। Mr. Nadeem Chaudhry had a couple of suggestions for the government on behalf of the National Press Club. सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि जिस वक्त ये पहली लहर आई थी, जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीन आई, उन्होंने अपने हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की, हमारे हेल्थ रिपोर्टर्स को भी वैक्सीनेशन की जानी चाहिए थी, बल्कि तमाम रिपोर्टर्स को जो फील्ड में काम कर रहे थे उनकी वैक्सीनेशन उस वक्त इंतहाई ज़रूरी थी।
president of the National Press Club, Shakil Anjum, had his own opinion on the government's lack of responsibility when it came to the health of media personnel. हुकूमत ने जिन्होंने सड़क पे खड़े होकर लोगों में तकसीम किए, उन्होंने हमें मास्क तक नहीं दिए। हमने सैनिटाइज़र खुद ख़रीदे और अदारों में पहुँचाए और यहाँ प्रेस क्लब में दिए, ग्लव्स दिए, खुद ख़रीदे और मास्क तक, यही बिल्कुल यही सेम सिचुएशन थी। और हमें आप है ना फ्रंट लाइन वर्कर, हमें तो वर्कर समझा ही नहीं हमें उन्होंने, क्योंकि एक नफ़रत की वेव थी गवर्नमेंट के दरमियान। हुकूमत हमें कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो माजी के स्कोर सेटल कर रही थी और हमारे लोग, हमारे मैक्सिमम हमारे 9 लोग फौत हुए सिर्फ एक शहर में। हुकूमत अगर हमें पाकिस्तानी या इंसान समझ लेती, हमारे लिए बहुत था कि हमने उन्हें, वो आखिरी हमारा, हम उनके लिए आखिरी ऑप्शन था। अब कुछ थोड़ा कुछ करने की दावे कर रहे हैं। With the growing tension and the threat of coronavirus, we hope Pakistan realizes the importance of news reporting in these difficult times and most definitely consider journalists as frontline workers.